Assalamualaikum. My name is Azim Iftihar, working as an assistant manager clinical pharmacy at Indus Hospital. आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे आईवी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। हमारे साथ दो स्पीकर मौजूद हैं, डॉक्टर जवेरिया चुगताई और डॉक्टर शेख मोहम्मद साद, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूँ दोनों का। डॉक्टर जवेरिया चुगताई जो हैं हमारे पास नेफ्रोलॉजी हैं यहाँ पर, टाउर यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट है। आफ्टर ट्रेनिंग विद GPMC Afan University Hospital and Kidney Postgraduate Center, she started nephrology specialist registrar in 2019 at Indus Hospital Karachi. She finished her FCPS in nephrology from CPSP and was promoted as consultant nephrology in July 2023. Dr. Javeria has a vast experience in dealing with AKI, CKDs, critical care nephrology, glomerulonephritis, kidney transplantation, and ESRD patients. He was the member of core team who established the kidney transplant program at MIKD and peritoneal dialysis program at IHHN. She has acquired certification in healthcare professional education from JPMC. For advanced training in peritoneal dialysis, she pursued fellowship from International Society of Peritoneal Dialysis, Malaysia. She is the lead of peritoneal dialysis program at Indus Hospital. She's also working as a general secretary of peritoneal dialysis task force and advocacy and general awareness task force of Pakistan Society of Nephrology. Other speaker is Sheikh Mohammed Saad, who has recently finished his graduation in PharmD in 2021. He is a gold medalist from Jinnah Medical University. He has been a part of pharmacy department since then. After his graduation, he has worked in inpatient and ER pharmacy. Now he is working in clinical pharmacy. He has certification of American Society of Health System Pharmacists for clinical pharmacy skills, and also has antibiotic stewardship certification from the University of Stanford. He is an MPhil scholar from University of Karachi in the field of pharmacology. Currently, he is providing clinical pharmacy services with the faculty of allied surgery and orthopedics. Over to you, Dr. Javeria. So, you will continue about the nephrology consults and discuss about the cases about the IV fluids and electrolytes. Over to you. Assalamu alaikum. I hope you all can hear me. Assalamu alaikum. I hope you all can hear me. The keyboard is not working. Okay. Yes. So this is actually a combined effort of clinical pharmacy department of Indus Hospital and nephrology department of Indus Hospital. And there are two parts of the presentation. So today is about mainly about the IV fluid therapy in hospitalized patients. So the learning objective of today's presentation is at the completion of this activity, you will be able to explain the basic concepts of osmolarity, types of IV fluids, general therapeutics of the electrolyte imbalances, identity, then the role of pharmacist in identification of the role of pharmacist in IV fluid management and stewardship program. So first of all, let's talk about the basic concepts of types of IV accesses on IV catheters, their flow rates and complications, and what are the different types of IV fluid used in the hospital setting, osmolality, fluid requirements. And then we will discuss about hydration status, how to assess hydration status, when to stop, how much is too much. And then we will discuss a case study in which we will build some common myths about the IV fluid therapy. So let's talk about types of IV access. So mainly the types of IV access, I hope most of you have been working in the hospital and have seen different patients
So there are two types of accesses. One which is centrally accesses, यानी कि central veins जो होती हैं उनमें IV cannula या IV line establish की जाती है. Then the peripheral accesses in the peripheral vein. So cost-wise, central access obviously it is expensive. It needs expertise to insert a central access line, and peripheral access is cheaper, and any nurse and the doctor with less expertise, it does not need, a specialized expertise to insert a peripheral access line. Then insertion, usually it is central access line is usually inserted under direct access, direct visibility, like ultrasound guidance or fluoroscopy guidance. Then the peripheral access can be inserted blindly. Okay, so the dual time central access can be left for almost a year, depending on the infection and the how to make the maintenance of the IV central access, the care of central access. But it can be retained up to, depending on the type of line, like the tunnel catheter can be left up to 1 year, while the double lumen catheter or CVP line, central venous pressure line, usually can be leave up to 2 to 3 weeks, depending on the site. And peripheral access has to be changed, like IV cannula should be changed after 72 to 96 hours. Central access needs flushing, it needs flushing with heparin at least once daily, while peripheral access needs flushing with normal saline at least 8 hourly. Central access lines are associated with more risk, like central line associated bloodstream infection, thrombosis, pulmonary embolism, arrhythmias, while peripheral access usually associated with risk of phlebitis, local infection, and extravasation. So central access have large diameter, so and peripheral access has a smaller bore. While the type of fluid, central access is actually beneficial, especially beneficial in when you need fluid therapy or the medication to be given which are corrosive or irritant in nature, or which like vasopressors, which are like the critical medicines like vasopressors or sedation. While peripheral access can easily be used for hydration, dilution, and common antibiotics or common IV medication. Osmolarity consideration in central access, all those medicines who have a high osmolarity, like greater than 900 milliosmol per liter, can be given easily via central access. While in peripheral access, there is limitation. The osmolarity consideration are less than usually 900 milliosmol per liter. There is fluids or medication usually given, the dilution. So the type of patient, usually central access is established in intubated or critical patients, or those like who require some like critical electrolyte replacement, or those seldom we use in the clinical setting in those patients who in which there is difficult to establish a peripheral access. So it rarely happens, but mostly it is used in intubated and critical care settings. While peripheral access is commonly used in almost in a ward or a critical care unit patient, or a high dependency unit patient admitted in the high dependency unit. So mobility with the central access, there is a risk of entanglement, and it needs good care, like the good exit site care, and proper dressing of the exit site. While peripheral access, there is no mobility restriction. Common sites in which jugular vein, subclavian vein, femoral vein, or peripherally inserted central line. While which is usually joined in the central forearm, which is established in forearm.
while the peripheral access can be established in any peripheral vein like median, cubital, dorsal venous arch, and cephalic. So you can see different sites for the types of IV access in these pictures. And in the right extreme of the right extreme pictures, you can see the catheter tip, which the catheter tip and usually in the centrally inserted lines are usually at the junction of right atrium and central vein. So IV catheter flow rate, if there is a comparison of the IV cannula. So if you notice that with the increasing number of like 24 gauge is the smallest IV cannula, while the 14 gauge is the largest bore IV cannula. And the maximum flow rate increase with the bore diameter of the IV cannula. So the least, the minimal flow with the yellow IV cannula, which has 24 gauge diameter, and it is 13 ml per minute maximum flow, while the orange one, which have 14 gauge IV cannula, which has maximum flow rate that will 270 up to 270 ml per minute. Now the common complications of IV catheter. So you can see the cannula here in our. So usually there are 4 common complications we usually see with the IV cannula and IV medication therapy. The infiltration and extravasation of the medicine in the subcutaneous tissue, the dislodgement of the cannula, site infection and sepsis like exit site or phlebitis, and occlusion and mechanical failure. So now let's discuss the scenario. Over to Mr. Saad. Thank you so much, Dr. Javeria and Dr. Azim. So my name is Dr. Sheikh Saad, as you all know. Dr. Azim ne mujhe abhi introduce bhi karaya. So we're going to further this case discussion by answering this question. The question reads as: a road traffic accident patient is being brought to hospital. During transition, an EMT or an emergency medical technician call is transferred to pharmacy. The EMT states that the patient is in hypotensive shock due to bleeding and has a blood pressure of 90/60, and he wants to administer norepinephrine to the victim and is asking for your advice about intravenous access. So what out of these 4 options, what option would you recommend to him? Central catheter is mandatory for norepinephrine infusion. Peripheral catheter should be employed with extra ports. Both IV access will work in this patient, or norepinephrine is contraindicated in this particular situation. We are opening up a poll for you guys. So please आपके जो screens हैं उनके ऊपर अभी ये poll आएगा. उस पे अपने जो answers हैं आप उसके ऊपर record करें. Then we'll see or discuss the answer. Please do bear in mind that time की limitation की वजह से the poll would only be open for the next 10 to 15 seconds only. Last 5 seconds. जो फर्स्ट पोल है उसमें रिजल्ट जो कह रहे हैं, ज्यादातर लोगों का ख्याल है कि बोथ IV access would work in this patient. कुछ लोगों का ख्याल है कि peripheral catheter should be employed with extra port. कुछ लोग कह रहे हैं norepinephrine contraindicated in particular situation. बाकी remaining left कह रहे हैं central catheter mandatory for norepi infusion. Let's consult from our expert. वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या correct answer है? Well, talking about the first option, central catheter is mandatory for norepinephrine infusion. In emergency situation, yes, ideally vasopressor should be
infused through central catheter. But as far norepinephrine infusion is concerned, it can be given through peripheral line. But if the requirement is not that high, up to 1 microgram per minute infusion can be given. If the norepinephrine required exceeds from this flow rate requirement, then we need central catheter. Then the second option is peripheral catheter should be employed with extra force. Actually, we need blood transfusion. The patient is in hypotensive shock due to it is basically hemorrhagic shock. Patient has and we need to transfuse him during blood volume to restore his circulation. So we need good bore peripheral cannula. Then both IV access would work in this patient. Yes, both IV access would work. Either peripheral cannula, IV cannula with a large bore, and or a central access. Norepinephrine is not contraindicated in this particular situation, but yes, if the like if you are standing in the emergency department and you receive such patient, the first response should be the volume resuscitation in this patient. Thank you. So further explaining this question in this case, I'm going to share two studies that were carried out in United States of America. The first study was done by these pharmacists that were working in Pittsburgh, Pennsylvania. ये Presbyterian Hospital के pharmacists थे. They did a prospective study in which 44 patients out of 87 original patients जिनको हम peripheral norepinephrine के infusion दिए गए थे, out of these 87 patients, 44 patients never even required CVC placement during their MIC stay. And out of them, 3 patients that amount to about 3% of the total population experienced adverse events, but none of them were documented as serious or required antidotes for their treatment. Therefore, in this hospital, the pharmacist concluded that implementation of protocol that the implementation of the protocol was associated with a decrease in number of patients at the unit level who received central venous catheters, even if they did not receive peripheral norepinephrine. तो बात समझने की जो है वो ये कि अगर आप peripheral lines का अगर आपको knowledge होगी, उसकी compatibilities आपको पता होंगी, you can not only decrease the cost of the patient and healthcare associated costs, but you can also decrease the burden on the patient, क्योंकि CVC लगाने में या CVCs लगाने में एक तो आपको जो है वो required होता है बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीका और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग, एक्सपीरियंस लोग. सेकंड ये कि आप पेशेंट को ओपन कर रहे होते हैं टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ बग्स एज वेल. It may also cause delay in the care, like अगर patient को immediate fluid resuscitation और support की ज़रूरत है with the person. So meanwhile you are establishing a central access, you can start IV fluid resuscitation and through a good bore cannula. Exactly. This second study was done at Cleveland Clinic, Ohio, by the Department of Pharmacy Services. They employed 635 patients who received peripherally infused norepinephrine. Out of these 635, 603 patients were those who received norepinephrine through the IV system for the first time. So out of them, 311 patients never required CVC insertion during their stay, and extravasation norepinephrine did occur in 35 patients, which is within the confidence interval of 95%. But most of these extravasation caused no or minimal tissue injury, and no patient required any surgical intervention following that. And they also reported that the max dose infused during their study was 15 mics per minute. So now the next question is, a patient weighing 110 kg is started on vancomycin. Continuous infusion at 120 mg per hour. Levels are sent at 24th hour and are found to be 15 micrograms per ml, corresponding to an area under curve of 360 micrograms per hour ml. At present, the patient discloses that the drip कभी-कभी चलती नहीं है. The patient has a 22 gauge IV in his dorsal venous arch. What intervention should be made? First option, access central line used with a smaller gauge cannula
increase dose to 150 mg per hour as per weight or switch to per oral clindamycin? आप लोगों के पास पोल्स जो हैं वो ओपन हो गए फॉर द नेक्स्ट 20-25 सेकेंड, तो आप लोग इसमें अपने पोल्स के आंसर्स दें एंड देन विल टॉक अबाउट इट. इस क्वेश्चन में लोगों का शुरू में ख्याल ये था कि डोज बढ़ा देनी चाहिए, फिर लोगों ने अपना चेंज किए हैं इसमें ऑप्शन. काफ़ी लोगों का सजेस्ट किया है कि इवन स्मॉलर गेज का कैन्युला यूज़ करना चाहिए. इसके अलावा कुछ लोगों ने बोला कि इंक्रीज करनी चाहिए डोज को 150 mg पर आवर के हिसाब से एज पर बॉडी वेट. कुछ लोगों का ख्याल है कि एक से सेंट्रल लाइन पे जाना चाहिए या वेनकोमाइसिन को स्विच करना चाहिए क्लेंडामाइसिन पे. तो एक लेट्स आस्क द एक्सपर्ट को क्या कहता है. So, if you have noticed in this case, the cannula is just 22 gauge size and it is placed in dorsal venous arch. So 22 gauge IV cannula, as we discussed in the previous slide, it is smaller in size. It has a smaller bore or diameter. So actually this patient was having problem with the IV medicine flow rate. So the problem is not with the infusion rate, infusion dose, it was with the IV cannula. And the size is the dorsal venous arch usually due to the movement of the head. It is difficult for a patient to keep their hand in a static position to maintain a flow. The flow of the continuous infusion medicine is difficult. So the best option in this case is use even a smaller gauge cannula. A smaller gauge means wider diameter and in a more prominent or larger way at a suitable site. मुझे काइंडली कंफर्म कीजिएगा सबको आवाज आ रही है, क्या सेशन ऑडिबल है? कोई माइक खोल के बता दे. सबको आवाज आ रही है? ठीक है, कंटिन्यू करते हैं. So now we are moving towards the types of IV fluids. So the types of IV fluids, there are usually either crystalloids and colloids. So crystalloid fluids में हमारे पास hypertonic fluids भी होते हैं, isotonic भी होते हैं, hypotonic fluids भी होते हैं. Tonicity is basically the effective osmolarity. Tonicity means effective osmolarity of the fluid. वो जो the effective osmoles जो blood vascular compartment में रहेंगे and osmolarity effect को exert करेंगे. So those fluids who are hypertonic have higher osmolarity than the normal serum osmolarity, and the isotonic fluids have almost similar, and we have normal saline and single lactate. In the hypotonic fluids, we have half strength saline or dextrose water. Colloid fluids include human albumin, starch-based solution, dextrin, gelatin, and blood products. It is the colloid basically because of their molecular constituency, molecular structure, they are associated with a higher percentage of volume retention in the plasma. It is like because they exert osmotic pressure in the oncotic pressure in the vascular compartment and keep the volume of the plasma retained in the vascular compartment. I hope this concept is clear to everybody. So it has sustained half-life of for human albumin
Rest of the volume is usually like shifted to the interstitial compartment or intracellular compartment. Then the ringal lactate solution, 250, it is associated with, is also associated with almost 250 ml of intravascular volume expansion. Then plasma light and or normosol R, which is almost similar to ringal lactate, it's the same. And 5% dextrose, only 100 ml, because the glucose usually shifted to intracellular compartment, and which is followed by the water shifting to the intracellular compartment and interstitial compartment. Then the albumin 5%, 500, it has the, if you see, all the colloid-based solutions like albumin 5%, 25%, hydroxyethyl starch, they all are associated with higher intravascular volume expansion, almost all equal to 500 ml, any 100% volume expansion. So this chart shows a comparison of content. Sodium chloride contains sodium 154 and chloride 154. Its osmolarity is 308. While ringal lactate is sodium 130, chloride 109, potassium almost 4 milliequivalent per liter, calcium 3, and lactate 28. Its osmolarity is 273. And so the normosol are this almost similar to the ringal lactate, sodium 140, chloride 98, potassium 5, magnesium 3. It does not have calcium. And the acetate, it is acetate based as compared to ringal lactate, and acetate content is 27 and gluconate is 23. And its osmolarity is also about 295 milliosmol per liter. So now over to Mr. Saad. Thank you, Dr. Javeria. So now we're going to carry this further for osmolality and osmolarity. So we're going to start our case with osmolality. So in a groundbreaking paper published in 1976 by Smithson and Gardner, they put forward a formula that can be used to find out plasma osmolality. So the formula of this goes as you take sodium concentration in your serum and then you multiply it by 2, then add the product into glucose. अगर वो mmol में है तो आप डायरेक्ट उसको ऐड करेंगे, अगर वो mg per dl में रिपोर्टेड है then you divide the answer with 18 and then you add it into the product. Same thing goes for your urea. अगर mg per dl में तो 2.8 से डिवाइड करके उसमें ऐड करेंगे, अगर वो mmol में given है तो you will just add it to the answer. Sorry, urea conversion होती है BUN में 2.8. तो अच्छा, एक शायद आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है, वो ये हो कि ऑस्मोलैरिटी और ऑस्मोलैरिटी दोनों जो है वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, स्पेशली केमिस्ट्री में. तो हम पढ़ते ही हैं, दोनों में डिफरेंस जो है वो आप यूनिट्स में देख सकते हैं. ऑस्मोलैरिटी इज टेकन अप व्हेन एवर यू आर मेजरिंग योर व्हीकल और फ्लूइड इन किलोग्राम्स, बट इफ यू आर मेजरिंग दैट or milliliters, you should always take up the word osmolarity. So they're not interchangeable, but they found the Smith and Gardner formula also shows that your plasma osmolarity is 99.5% similar to plasma osmolarity. So therefore, there is no clinically significant difference. You can find out osmolarity or osmolarity, they would be 99.5% equivalent to each other. But जो चीज़ हम लैब से कैलकुलेट करवाते हैं, that is osmolality, because it is reported in milliosmoles per kilogram. So इसके अंदर अगर आप अपनी values put करेंगे, which are the normal values, you'll find that the range of normal plasma osmolality goes from 275 to 290 milliosmoles per kg. कुछ books में, कुछ literatures में आपको 300 to 305 का reference भी मिलेगा, but mostly जो है हम 275 to 290 को नॉर्मल लेते हुए चलते हैं. And as I described you earlier, tonicity is effective osmolarity. बिल्कुल सही कहा. One more difference that you can find out is that osmolarity is always measurable. It is an objective quantity, so you can measure it with units. But tonicity is a relative effect. कि उसका उस osmolarity में रहते हुए सेल के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, वो उसकी tonicity है. So you can see that if there is a high plasma osmolarity, हमेशा osmolarity को solute concentration के साथ हमने correlate करते हैं. So high plasma osmolarity means there is high solute or solid content, there is low water content.
So whenever there is low water content, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक concentration gradient develop होगा, which will drive water from the tissues outside into your intravascular space. This is called fluid efflux. This will lead to cellular shrinkage and dehydration. जबकि conversely, if you have a low plasma osmolarity, which means there is low amount of solute but a high amount of fluid or water in your intravascular space, this will cause another concentration gradient, which will drive the water outside the intravascular space into your tissues and peripheries, causing edema and even bursting of the cell, which is called plasmolysis. इसको हमने diagrammatically भी show कराने की एक कोशिश की है. एक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, पेशेंट है सोडियम 116, ग्लूकोज 332 and urea 189. So how would you calculate the plasma osmolarity of such patient? इसका जो है वो पोल नहीं है, इसका आंसर आपने खुद कैलकुलेट करके चैट बॉक्स में लिखना है. यू हैव अबाउट 30 सेकेंड्स. 30 सेकेंड में आप इसका आंसर कमेंट कर दें, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं. फॉर्मूला मैं आप लोगों को शो कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए. The plasma osmolarity can be calculated by multiplying your serum sodium concentration by 2 and then adding the product of these two into your glucose concentration and urea concentration. अगर ग्लूकोज और यूरिया आपका mg per dl में है या BUN आपका mg per dl में, तो आप उसको 18 और 2.8 से रिस्पेक्टिवली डिवाइड करेंगे टू गेट इट इनटू द स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट्स. आप इस क्वेश्चन की जरूरत आता है. ठीक है, we have one answer from Hiba Amir. She says 334 milliosmoles per kg. So moving forward with this answer, you can see that the glucose level is way higher than the normal and so is urea. So this means आपके पास solute के जो major determinants हैं by virtue of molecular weight, that is glucose and urea. So this means there is a higher amount of solute present or a higher mass of solute present in the intravascular space, which means it is a hyperosmolar state. Therefore आपके पास जो 300 above आपकी अगर आंसर आ रहे हैं तो वो बिल्कुल सही आ रहा है. Now we're going to start our mathematical section. इसमें हम चेक करते हैं कि हम अगर हमारे पास कोई भी IV fluid है तो as a pharmacist हम उसकी osmolarity कैसे identify कर सकते हैं. So to calculate osmolarity of any IVF or any IV fluid, we have a formula which gives osmolarity. याद रखिएगा ये osmolality नहीं है, osmolarity है, which is given in milliosmoles per liter because you measure your fluid levels in liters. Right, so whatever is your fluid, you're going to take the amount that is present in 1 liter of that fluid, you divide it by its molecular weight and then multiply it with 1000 and osmoles. 1000 से multiply करने का मकसद ये है कि जो आंसर है उसको मिली ऑस्मोल्स पर लीटर में स्टैंडर्डाइज यूनिट में कन्वर्ट करें, जबकि ऑस्मोल्स में मल्टीप्लाई करने का मकसद ये है कि जितने भी पार्टिकल्स वो डिसोसिएट करके एक एक्वस सॉल्यूशन में दे रहा है, we also have to factor in their role in the osmolarity of the final IV fluid. So once again, the formula is amount present in 1 liter of the amount of solute या amount of salt या amount of whatever substance it contains in 1 liter of that fluid divided by its molecular weight, then multiplied by osmoles and then finally with the 1000. अगर आपके पास amount in ग्राम नहीं given, अगर आपके पास weight नहीं given तो MEQs given होंगे. MEQs के थ्रू osmolarity निकालने का जो method है, that is you take the weight. वेट निकालने के लिए जो आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, दैट इज टू टेक हाउ मेनी MEQs आर प्रेजेंट एंड देन मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलेकुलर वेट एंड देन डिवाइड बाय 1000 टू रिड्यूस इट्स मोलेकुलर मिली इक्विवेलेंट में से मिली हटाने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर दें एंड देन आपके पास 1 लीटर का अमाउंट आ जाएगा. देन यू डिवाइडेड बाय मोलेकुलर वेट एंड देन मल्टीप्लाई बाय ऑस्मोस एंड देन 1000 एज यू कैन डू इन द प्रीवियस इक्वेशन. ठीक है, तो वेट निकालने का फॉर्मूला है यू टेक द MEQ मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलेकुलर वेट एंड डिवाइडेड बाय 1000.
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 20 मिली एक्विवेलेंट KCl है इन 1 लीटर इन्फ्यूजन, तो मैं उसकी ऑस्मोलैरिटी जानना चाहता हूँ। तो उसके लिए 20 MEQ को मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा उसके जो वो है मोलेकुलर वेट है। KCl का मोलेकुलर वेट है 74.5 बिकॉज क्लोराइड इज 35.5 एंड पोटेशियम इज 39। तो 74.5 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा 1000 से, तो दैट विल गिव मी माय ऑस्मोलैरिटी। So another class work for you, what is the osmolarity of 0.9% sodium chloride and is it isotonic in nature? ये आप लोगों का एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग अपने चैट बॉक्स में ड्रॉप करें, देन विल टेक इट ऑन फ्रॉम देयर। सही है, आइसोटोनिसिटी के तो आंसर सबके आ रहे हैं, बट व्हाट इज द ऑस्मोलैरिटी ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड? उसकी ऑस्मोलैरिटी भी कैलकुलेट करके बताएं प्रीवियस फार्मूला से। मैं फार्मूला आपको दोबारा शो कर देता हूँ। ठीक है, एक आंसर हमारे पास आया 308 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। दिस इज वेरी करेक्ट। ठीक है, इसी आंसर को हम बेस बना के आगे लेके चलते हैं। द आंसर इज के आपकी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 308 जिसका आंसर आया, दैट इज द करेक्ट वन। So in order to calculate the osmolarity of 0.9% normal saline, you take the amount of solute present in 1 liter. 0.9% का मतलब ये 0.9 gram per 100 ml. So in 1 liter, you will get only 9 grams of sodium and chloride divided by its molecular weight, जो कि है 58.5. Then multiplied by 2 osmoles because it dissociate होके एक sodium और एक chloride आएंगे, and then multiplied by 1000. So the answer is 307. But we know कि जो हमारी osmolarity है वो तो 287 to 290 275 के बीच में फॉल करता है। तो this means the sodium chloride is a hypertonic solution. लेकिन हमें ये भी पता है कि hypertonic नहीं है, isotonic या normal saline है, right? तो इसका डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे कि जो आपकी commercially prepared products होती हैं, your commercially prepared products are only 93% efficient. This means that out of each 100 ions, only 93% dissociate completely in your plasma. The rest of the 7% they do not dissociate. So if you this is called osmotic coefficient. So if you multiply your osmolarity with your osmotic coefficient, you will get 287 milliosmoles per liter, which falls within the range of normal plasma osmolarity. So this shows that 0.9% normal saline, even though इसकी osmolarity 307 या 308 आप लोगों ने calculate की, it is still isotonic because only 93% of the content completely dissociates in your plasma. Then we have our next question. इसके आपके पास poles होंगे। Dextrose 50%, ये जिसे normally हम pharmacy की language में D50 भी कहते हैं, it has an osmolarity of 2777, 2144 and 2525. You can take the molecular weight of dextrose as 180 gram per mole. The poll is now open for your answer. इसमें शायद आप लोगों को थोड़ी सी देर लगेगी बिकॉज कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला इज अमाउंट in 1 liter divided by its molecular weight, जो कि given है, multiplied by number of osmoles and then multiplied by 1000. अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पास पर ml की ऑस्मोलैरिटी शो करेगा। दो तरह के आंसर हमारे पास आए। 2525 को ज्यादा लोगों ने वोट किया है और 277 का भी लोगों ने वोट किया, कुछ लोगों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है। तो देखते हैं क्या आंसर सही है। तो द करेक्ट आंसर इज 2525। जिन लोगों का 2777 आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है
बिकॉज उन्होंने जो डेक्सट्रोज का मोलेकुलर वेट लिया है वो लिया है 180। यू शुड कीप इन माइंड कि हम वैसे तो बोल रहे होते हैं डेक्सट्रोज लगा दो, डेक्सट्रोज की ड्रिप है। इट्स नॉट डेक्सट्रोज, इट्स डेक्सट्रोज एंड वाटर। इट्स डेक्सट्रोज 50% concentration in water, so you also have to factor in the weight of the molecular weight of water inside. So अगर आप 180 डेक्सट्रोज का वेट ले रहे हैं तो you also have to factor in 18 gram per mole molecular weight of water. So the molecular weight in this specific example would be 198, not 180. इसकी वजह से आपका आंसर जो है 2525 या 2525 milliosmoles per minute है। Which brings us to our next question. इसका भी पोल है आपके पास, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। डेक्सट्रोज 5% इज स्लाइटली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसकी जो मिलियोस्मोल्स पर लीटर में वैल्यू है 252 है, सो इट्स स्लाइटली हाइपोटोनिक या हाइपोस्मोलर। एंड नॉर्मल सलाइन 0.9% इज एन आइसोटोनिक फ्लूइड 287, जो अभी हमने कैलकुलेट भी की है। सो देयरफॉर द कॉम्बिनेशन जिसे हम DS कहते हैं या कमर्शियली D5NS कहते हैं, इट इज अ आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पोज आप लोगों की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो D5NS की क्या आइसोटोनिसिटी है या टोनिसिटी है? उसमें 45% लोगों का ख्याल है कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है, 32% लोगों का ख्याल है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा, और 23% लोग समझते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। So the answer is hypertonic solution. एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप 252 और 287 को प्लस करेंगे, उनको ऐड करेंगे, तो यू कैन सी कि वो 500 या 600 के आसपास उसकी ऑस्मोलारिटी जाएगी, विच मीन्स द solution that you have in hand is hypertonic solution. So D5NS is a hypertonic solution, but as soon as it is injected into the body, जब ये बैग में तो hypertonic है, लेकिन जब ये बॉडी में जाती है तो जो डेक्सट्रोज आपका जो शुगर कंटेंट है that gets metabolized into carbon dioxide and free water, which means जो डेक्सट्रोज 5% है, it gives a diluting effect, जिसकी वजह से आपका जो एक इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ जाता है, which causes a hypertonic shift. तो जब तक ये एक बैग में है, आपके प्लाज्मा में नहीं गई है, मेटाबोलाइज नहीं गई है, तो D5NS is a hypertonic solution, but as soon as it goes inside your plasma and gets metabolized into free water and carbon dioxide, it becomes hypotonic solution because it has an ability of giving free water to your body. Now let's move to the next part of presentation, which is fluid requirement. So in an average adult man with 70 kg, so there are two kind of body compartments. So the intracellular and the extracellular. And mainly हमारी body का जो 60% है वो water है। तो हम कहते हैं total body water, ये total body जो water है वो 0.6 से हम multiply करते हैं जब weight से, तो हमारे पास total body water of the fish आ जाता है। फीमेल से स्लाइटली कम होता है, उसमें हम 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस टोटल बॉडी वाटर को देखें तो या तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट होता है या एक्स्ट्रासेलुलर। इन इंट्रासेलुलर मेजॉरिटी ऑफ द हमारा जो मेजर पोर्शन ऑफ वाटर है टोटल बॉडी वाटर वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में होता है, विच इज अप्रॉक्स 28 लीटर, while in extracellular fluid compartment we have 14 liters. Then again extracellular fluid compartment दो compartment में divide होता है,
वन इज इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, यानी जो वेजल कंपार्टमेंट में वो तमाम फ्लूइड जो कि जो सेल के आउटसाइड है, आइदर या तो ब्लड वेजल के अंदर होंगे या इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में होंगे, जो कि एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा वेस्कुलर में भी इंटरस्टिशियल या फिर ट्रांससेलुलर सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है। तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में 3 लीटर होता है, जो कि प्लाज्मा, मेनली प्लाज्मा वॉल्यूम की सूरत में होता है। देन जो है हमारे पास जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में 10.5 लीटर एंड रेस्ट ऑफ द 0.5 लीटर इज ट्रांससेलुलर फ्लूइड। So you can see in the diagram, जब हमारे इस साइड पे जो डायग्राम से अगर आप देखें तो यहाँ हमने बताया कि एवरेज इनटेक पर डे कितना होता है, एवरेज हमारा आउटपुट क्या होता है। ये इन अ पर्सन विद नॉर्मल फिजियोलॉजी उसका इनटेक आउटपुट सब चीजें बैलेंस रहती है। इफ यू हैव नोटिस दैट कि अगर आप पानी कम पियेंगे तो आपके आउटपुट जो है ना खुद ही रिड्यूस हो जाता है, आपकी जो यूरिन आउटपुट भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर ये टेंडेंसी है, ये अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे हमारे अंदर ये रखा है कि इनटेक आउटपुट को एक बैलेंस में रखा जाता है। तो इन एन एवरेज पर्सन एवरेज इनटेक पर डे कितना होता है, हम बेवरेजेस या फ्लूइड की सूरत में ऑलमोस्ट 1500 ml तक लेते हैं। फूड से जो जनरेट होने वाला जो उसके अंदर या वाटर कंटेंट जो होता है वो 750 ml होता है। एंड देन जो इंट्रासेलुलर मेटाबॉलिज्म से 10% यानी अप्रॉक्स 250 ml प्रोड्यूस हो रहा होता है। Then the average output per day is मेन जो हमारा आउटपुट का जो है यूरिन की सूरत में होता है जो 60%, which makes approx 1500 ml per day. 700 ml is insensible losses through skin and lungs and 200 ml in the switch. गर्मियों में वो भी बढ़ जाता है। then the feces में 4%, that is approx 100 ml. तो अगर फ्लूइड रिक्वायरमेंट है उसमें हमारी बॉडी में कोई भी फ्लूइड होता है उसके अंदर आयंस होते हैं। ठीक है, तो एक है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जैसा हमने पहले पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, इट इज मेनली इन द आइदर इन द वेस्कुलर कंपार्टमेंट प्लाज्मा की सूरत में होगा या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा जो कि इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के अंदर होगा। Then intracellular fluid it is inside the cell. So in the extracellular fluid compartment, it is mainly composed of जो यहाँ पे जो major cation होते हैं वो हमारे सोडियम होते हैं, स्मॉल और पोटेशियम कम होगा और कैल्शियम उससे भी कम, बाकी दूसरे इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। While in the intracellular, the major chunk is potassium. Potassium is mainly an intracellular cation, while sodium content inside the cell is relatively is remarkably low as compared to the extracellular compartment. अब हम एनाइंस से देखें तो बाइकार्बोनेट मेनली जो है आपके वो दोनों कंपार्टमेंट में बराबर होते हैं ऑलमोस्ट, while chloride content is more in the extracellular compartment. While in the intracellular compartment हमारे पास मेनली फॉस्फेट, सल्फेट और प्रोटीन्स होते हैं। Now the fluid requirement, जब क्लिनिकल प्रैक्टिस में अगर आप लोग की क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी हमारे साथ राउंड में शामिल होते हैं तो यूजुअली वो डॉक्टर्स को देखते होंगे कि वो यूजुअली डिस्कस अबाउट द वॉल्यूम स्टेटस क्या है। स्पेशली अगर नेफ्रोलॉजी केस में आए तो हमारे तो मेन मेजर जो डिसीजंस होते हैं क्लिनिकल वो वॉल्यूम स्टेटस की बुनियाद पर लिए जाते हैं। So there are certain signs and symptoms, या तो पेशेंट बिल्कुल यू वॉलेमिक होगा, बैलेंस्ड होगी उसके अंदर, या फिर वो डिहाइड्रेटेड साइट पे होगा या वॉल्यूम डिप्लीटेड साइट पे होगा, या वो हाइपरवॉलेमिक होगा। तो अगर आपको क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वॉल्यूम डिप्लीशन के लिए जो है ना एटलीस्ट 15% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम लॉस्ट होना चाहिए, दैट इज अप्रॉक्स 750 ml। तो तब जो है ना क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स एविडेंट होना स्टार्ट होते हैं। तो द मेन साइन एंड सिम्टम्स जो कि देखे जाते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज कम होगा और अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा तो ज्यादा होता है। टैकीकार्डिया, अभी हम जो है ना सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम डिप्लीशन की बात कर रहे हैं तो मैं उसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात कर रही हूँ। तो यूजुअली इन द वॉल्यूम डिप्लीशन ब्लड प्रेशर आर ऑन लोअर साइड, टैकीकार्डिया होता है, ऑर्थोस्टैटिक चेंजेस इन द बीपी और हार्ट रेट होते हैं, यानी कि अगर फ्रॉम पेशेंट जो है ना फ्रॉम द लाइन पोजीशन अगर बैठेगा खड़ा होगा तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा और हार्ट रेट इंक्रीज होगा।
देन जो इंक्रीज जो है BUN टू सीरम क्रेटिनिन रेशियो, जब भी डिहाइड्रेशन होती है तो यूरिया रिलेटिवली क्रेटिन के मुकाबले में ज्यादा बढ़ा हुआ होता है. You will find dry mucous membrane, increased capillary fill time, ठीक है, and decrease skin turgor and reduce urine output less than 5.5 ml per kg. पेशेंट को सिम्टोमेटिकली डिजीनेस होगी, ब्लैकआउट हो रहे होंगे, जनरलाइज वीकनेस, लेथार्जी की कंप्लेन करेगा. एंड जब भी, और दूसरा जो क्लिनिकल साइन वो है कि आपने अगर उसको फ्लूइड चैलेंज दिया, बुलस दिया, तो उसके बाद हार्ट रेट और बीपी में आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगी. तो यू कैन सी इन द पिक्चर कि नॉर्मल जो है ना, विद इन जब कैपिलरी रीफिल की हमने बात की थी, तो क्या होता है कि जब आप उसको प्रेस करते हैं अपनी फिंगर पे, इसको थोड़ा सा प्रेशर देते हैं, तो जो है ऑक्लूड करते हैं कैपिलरीज को. फिर उसके बाद जब आप हटाएंगे, अपना प्रेशर रिलीज करेंगे, तो ये विद इन 2 सेकेंड जो है ना वो दोबारा फ्लश हो जाता है. बट इफ दिस इज डिले, इसका मतलब है कि वॉल्यूम डिप्लीटेड है पेशेंट. इसी तरह स्किन टर्गर आप चेक करते हैं, इफ इट इज जो है ना, जो पिंच करने के बाद अगर वो फॉरन रिबाउंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है. नाउ द फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स इन पीडियाट्रिक्स. ओवर टू मिस्टर साद. So, thank you, Dr. Javeria. So now we're going to talk about the dosing protocols for fluid. So pediatrics की बात करें, you have to start with giving fluid boluses. अगर patient dehydrated है या shock में जा रहा है, तो normally 10 ml per kg की fluid boluses से हम start करते हैं, but you can go as high as 30 ml per kg in severe conditions, for example in life-threatening hypovolemic shock. So these are the boluses, but for maintenance therapy, we usually in Indus Hospital we usually apply Holiday Siga formula, which was put in 1957. So Holiday Siga formula shows that for infants weighing about 3.5 to 10 kilograms, the daily fluid requirement is 100 ml per each kilogram of their body weight. When your child exceeds 10 kg of weight and ranges between 11 to 20 kg, the daily fluid requirement also increases to 1000 ml as a constant for the first 10 kg, and then for each kg that exceeds your 10 kg baseline, you add 50 milliliters for that kg. For example, अगर आपका बच्चा 15 kg का है, तो जो first 10 kg है उसके लिए 1000 ml would be fixed, and then the next 5 kg के लिए 50 ml per kg के हिसाब से 250 आप उसमें ऐड कर देंगे, यानी total fluid requirement for that patient would be 1250 milliliters per day. And for those children who are exceeding the weight limit of 20 kilograms, the daily fluid requirement is 1500 ml constant, and then for the first 20 kg, and then each kg that exceeds the first baseline 20 kg, you add 20 milliliters for each of them, to a maximum of 2.4 to 2.5 liters per day. Also, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप 24 hours से डिवाइड करेंगे, that would give you your rate of infusion. अडल्ट्स की बात करते हैं, अडल्ट्स में यूजुअली हम बोलसेस दे रहे होते हैं फ्रॉम 500 ml टू 1 लीटर. कभी हमें फ्लूइड चैलेंज देना होता है तो 300 ml के भी हम फ्लूइड बोलसेस जो है वो दे रहे होते हैं, स्पेशली इन क्रिटिकल केयर पेशेंट. मेंटेनेंस में हम हॉलिडे सिगार मेथड के जो लास्ट पॉइंट है उसी को यूज करते हैं, दैट इज 1500 ml फॉर द फर्स्ट 20 kg एंड देन 20 ml per kg फॉर ईच किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट दैट एक्सीड्स योर बेसलाइन 20 kg. या फिर हम एक बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच देते हैं जिसमें हम टोटल बॉडी वेट को मल्टीप्लाई करते हैं 20 to 40 ml से, और फिर इसको 24 आवर्स से डिवाइड करके इसका टोटल आपका जो है वो आ जाता है. सिंप्लिसिटी के लिए यूजुअली हमारे पास अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो वी गेट कंटिन्यूस आंसर. इसके लिए सिंप्लिसिटी के लिए यूजुअली अडल्ट्स में 50, 75, 100, 125, 156 डोजिंग भी चल रही होती है, डिपेंडिंग ऑन द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द पेशेंट. फॉर एग्जांपल, इफ द पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड या हाइपोवोलेमिक, यू मे स्टार्ट योर IVF एट 100 ml और 150 ml per hour. लेकिन अगर पेशेंट यूवोलेमिक है, ओरली भी वाटर ले रहा है, बट फॉर सम रीजन यू आल्सो वांट टू गिव IVF, यू कैन स्टार्ट द पेशेंट ऑन 50 और 75 ml per hour. इससे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पेशेंट का देखिए, चाहे एडल्ट हो या पीडियाट्रिक, जब IV फ्लूइड थेरेपी होती है तो इट इज नॉट अ ब्लाइंड थेरेपी कि आपने स्टार्ट की और उसके बाद आप भूल गए. पेशेंट की क्लिनिकल स्टेटस जो है ना चेंज होता है, स्पेशली इन द क्रिटिकली इल पेशेंट का क्लिनिकल स्टेटस मिनट टू मिनट चेंज हो रहा होता है. तो यू नीड फ्रीक्वेंट असेसमेंट, और आपके जो इन्फ्यूजन रेट होते हैं फ्लूइड के वो उस पर डिपेंड करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. उसमें ना सिर्फ आपको ये देखना होता है कि ऑनगोइंग लॉसेस क्या है, और लॉसेस को भी रिप्लेस करना है, मेंटेनेंस थेरेपी भी देनी है, देन उसका ओरल इंटेक, जब भी उसका ओरल इंटेक उसका इम्प्रूव होने लगेगा तो ओरली इंक्रीज करके IV फ्लूइड थेरेपी को रिड्यूस करना है.
so which needs like frequent assessment, और हर assessment ये हो सकता है कि सुबह आपका plan change हो लेकिन शाम तक आपको अपना plan change करना पड़े। फिर उसमें एक बहुत important चीज है कि यूरिन आउटपुट, पेशेंट अगर यूरिन आउटपुट नहीं पिकअप होता, उसको एक KI हो चुका है और उसका यूरिन फॉर्मेट नहीं रहा है, वो अब जो है ना एन्यूरिक है पेशेंट या ओलिगोयूरिक है ड्यू टू किडनी इंजरी, तो उसमें आपके जो है ना और जो है ना आपको बहुत कॉशियस हो जाना चाहिए विद IV हाइड्रेशन थेरेपी। So now we're going to talk about a specific condition that requires a very, very aggressive approach towards hydrating the patient. This is the burn. Burns में क्या होता है, आपकी subcutaneous fat layer is burnt off. This means that there is no insulating layer to prevent the loss of water from your body. So there is a very aggressive water loss, and to replace that water loss, you have to hydrate the patient aggressively as well. So in such conditions where the patient is suffering from burns, especially third-degree burns, your total body water requirement also increases as compared to a normal patient. So Parkland formula is used to identify the initial fluid requirements for burn patients. इसमें होता क्या है, you take the body weight of the patient and then multiply with the total burned body surface area, जो कि TBSA के तौर पे यहाँ पे denoted है, and then you multiply the product with 4 ml. So you can see that you have to give 4 ml for each body weight, for each kilograms of the body weight, and then multiply it with the total burned surface area of the body. So जो भी आपका आंसर आएगा, that would give you the total crystallized fluid in the first 24 hours. So out of that volume, you have to give half of that in the first 8 hours aggressive therapy के तौर पे, and then जो बाकी 50% बचता है, you have to give the next half of the volume over the next 16 hours. इसके अंदर हमने एक एग्जांपल लिए, हमारे पास एक 80 kg का इंडिविजुअल है जिसका एंटीरियर ट्रंक और एंटीरियर राइट आप तक बर्न्स आए, which corresponds to about 22.5% of its total body surface area that has been burned off. So using the Parkland formula, we identified that the total body water requirement for this patient is 7.2 liters, which is drastically higher than the normal body requirement of 2.5 to 3 liters per day. So out of 7.2 liters, half of it, that is 3.6 liters, is corrected over the next 8 hours aggressively, और जो बाकी 3.6 ml है वो नेक्स्ट 16 आवर्स में स्लोली उस पेशेंट को इन्फ्यूज करते हैं। रेट ऑफ इन्फ्यूजन निकालने के लिए ऑब्वियसली आप उसको नंबर ऑफ आवर्स से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास ml per hours में आपकी रेट ऑफ इन्फ्यूजन आ जाएगी। Which brings us to our next question. The poll will be open. Calculate the rate of fluid infusion for a 9-year-old 23 kg female. The answers are 230 ml per hour, 1560 ml per day, or 65 ml per hour. इस सवाल में हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आंसर टिक किया गया वो 65 ml पर आवर को टिक किया गया है। इसके अलावा लोगों का ख्याल है 230 ml पर आवर और 1560 ml पर डे देना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स बताएंगे क्या इसका आंसर है। So the answer is 65 ml per hour. उसके अंदर हम holiday CPR method को use करते हुए, you can see that the third point of the holiday CPR used for the first 20 kg of the weight, 1500 ml would be constant, and for the next 3 kgs that exceed your baseline 20 kilogram limit,
you add 20 ml for that. So total would be 1560 ml per day. I did not ask you the total daily requirement. I asked you the rate of fluid infusion जो कि per hour में या ml per minute पे हम निकालते हैं. तो 1560 को जब हम 24 से divide करेंगे तो you will get your answer which is 65 ml per hour. एक question chat box में आया है. Chat box वाला question जो है वो पूछ रहा है for Parkland formula what if the weight of the patient is not available in case patient is sedated because of full thickness burn? In that case, we usually take the ideal body weight or the an average body weight, seeing the build and of the patient. Thank you, Dr. Javeria. So the hydration status. How much is too much? So the hydration status can be assessed by BP and heart rate. It will be increased in fluid overload and decrease in volume depletion. MAP is usually increased in volume overload, but it's a weak indicator, while the volume depletion, it is decreased. In the urine output is usually 1 to 1.5 ml per kg in pediatric is normal, while in adults 0.5 to 1 ml per kg per hour is considered normal. Decreased urine output signifies like either this patient is volume depleted. Serum osmolarity in dehydration or volume depletion is increased, while in the overhydration, serum osmolarity is decreased. So physical signs of hydration status are usually the mentation is altered. In hypovolemia and in hypervolemia, if it is causing hypoxemia, you may find altered mentation. Vital signs, as we discussed earlier, in volume depletion, BP, heart rate, BP and heart rate is increased. BP is decreased and heart rate is increased. While and respiratory rate may also be increased. While in hypervolemia, BPs are usually on higher side, heart rate is increased, and respiratory rate is also increased. Sunken eyes and dry mucosa are a sign of volume depletion. While in the weight, if the patient has edematous, you may find there is a weight gain. In input-output balance, if you see there are positive signs of volume retention like edema, anasarca or ascites, third space sequestration, or there are chest crackles in the chest, or in the fluid balance usually it's found positive. Means there is more intake than the output. And in dehydration, you may not find edema and sarcoidosis, but you may find decreased skin trigger, increased capillary refill time, and usually the fluid balance is negative. So now the question. So we have a 7-year-old, 13 kg child who is under your care for the past 40 hours for diarrheal episode. He is currently drowsy but arousable on stimulation. His BP is 97 by 67. Heart rate is 110. He is on ringer lactate at 25 ml per hour. He has made 40 ml urine output, and in the last 12 hours. Basic metabolic panel is pending. For the result, what is the appropriate course of action? Now we are starting the pool. Please mark your answer in the pool, and then we will discuss the answer.
इस पोल में कुछ लोग कंफ्यूज हैं, तो पहले बीएमपी का रिजल्ट कब वेट करना चाहिए या ऐसे ही स्टार्ट कर देना चाहिए, तो आज करते हैं हम अपने पैनलिस्ट से वो क्या So let's discuss the scenario. So एक बच्चा है, ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि डायरियल एपिसोड के साथ आया है. डायरियल एपिसोड मीन लाइकली पेशेंट इज वॉल्यूम डिप्लीटेड. देन उन्होंने एग्जामिनेशन और फाइंडिंग जो डिस्क्राइब की वो भी हमारे डायग्नोसिस को फेवर कर रहे हैं कि इज ड्राउजी बट अराउजेबल, बीपी भी लोअर साइड पर है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो पेशेंट तो वॉल्यूम डिप्लीटेड है. नाउ उसको 40 आवर्स हो चुके हैं हॉस्पिटल में आए हुए और उसकी अभी रिंगर लैक्टेट से फ्लूइड रिससिटेशन हो रही है विच इज ऑन एट द रेट ऑफ 25 ml पर आवर. उसको यूरिन आउटपुट भी कम है फॉर लास्ट 12 आवर्स. सबसे पहले तो ये सोचिए क्या ये इन्फ्यूजन रेट सही है इनके लिए. 25 ml पर आवर, 13 kg चाइल्ड, 7 years एज, इनकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट क्या होगी? अगर हम हॉलीडे सीगार मेथड के पॉइंट नंबर 2 को देखें तो वो 11 to 20 kg वेट का जो वो उसमें था, उसमें फर्स्ट 10 kgs के लिए जो है 1000 ml वॉज कांस्टेंट. तो इसका जो है तकरीबन कोई जो रेट बनेगा वो इससे हायर बनेगा, हायर देन 25 ml पर आवर, जिसमें द पेशेंट वाज बीइंग अंडर डोज विद प्योर IV फ्लूइड. देन पेशेंट इज हाइपोटेंसिव, तो इनिशियल जो हमारी जो थेरेपी होती है वो बोलस फॉर्म में होती है. So your next appropriate action is give ringer lactate 250 ml IV stat bolus form. एक चीज ये भी कि जब पेशेंट हमारे पास क्रिटिकल हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो हम किसी लैब रिजल्ट्स का यूजुअली वेट नहीं करते. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिसीजन था कि वी वेट एंड देन ऑन. No, we will start fluid resuscitation. We will, हमारा जो पहला गोल होता है ना, पेशेंट को वाइटली स्टेबलाइज करना होता है. ठीक है. मीनवाइल जो लैब रिजल्ट्स होते हैं वो आपके डायग्नोस्टिक एड के लिए होते हैं या ऑनगोइंग जो भी कोई अगर लॉसेस उसको इस्टेब्लिश करके उसको जरा रिप्लेस करने में हेल्प करते हैं, आपकी ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए होते हैं. लेकिन इमरजेंसी मैनेजमेंट आपकी लैब से पहले ही स्टार्ट हो जाती है. नाउ वी विल डिस्कस अ केस. So Mr. A is rushed into your ER by his family. He is a 25-year-old male. His weight is about 45 kg. He has been having on and off abdominal pain in the right upper quadrant for the past 3 months, but never really took any medication or medical advice for it. For the last 2 weeks, the pain has increased in intensity. He has not been able to eat properly for the last 3 days. He had 3 episodes of projectile bilious vomiting today. No other medical, familial, or surgical history is remarkable for any event. So he was examined by the ER physician. He is afebrile, 99.7 degrees centigrade temperature, and BP is on lower side, 97/71, heart rate 108, respiratory rate 26. There is rebound tenderness in the right upper quadrant with a palpable mass. And ABG shows pH of 7.49, PCO2 34, PO2 91, and bicarbonate of 35. All other labs are pending. It is a common scenario. Patient came in with vomiting, and he is hemodynamically a bit unstable, and this is his blood gas report. So what is the current problem we are dealing with? Anyone? If they can, any one of you can switch on their mic and unmute themselves and can answer. आप चैट में भी अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं और माइक खोल के भी बता सकते हैं. मैम एक हमारे पास आंसर है वॉमिटिंग एंड पेन, सेकंड इज पेन एंड लो बीपी, थर्ड इज अल्कलोसिस, फोर्थ इज बीपी एंड हार्ट रेट, फिफ्थ इज लो बीपी. Good. So pain, yes, and dehydration. Dehydration के consequences हैं, जिसमें आप क्या क्या बता रहे हैं हमें कि इनको हाइपोटेंशन हो रही है,
और इनको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है, ठीक है। These are actually the consequences of the main problem, which is dehydration. The ER physician orders Tramol 100 mg IV stat ondansetron, ठीक है, पेन मैनेज कर दिया, उनकी वॉमिटिंग को मैनेज कर दिया. While it's being given, the doctor has a question regarding choice of fluid for the resuscitation. Should it be normal saline or ringer lactate? Now, what will be your response? आप लोग यहाँ पर भी हम पोल ऑन कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग उस पर आंसर अपने बराबर की वोटिंग चल रही है. पीटीआई और नून लीग का इलेक्शन हो रहा है. हाँ. ग्रुप पे नहीं सब एनएस ही लिख रहे हैं. ज्यादातर लोगों ने नॉर्मल साइन नवाज शरीफ को वोट किया. अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि नॉर्मल सलाइन जिन्होंने कहा है वो क्यों नॉर्मल सलाइन को रिंगर लैक्टेट पे प्रेफर कर रहे हैं? कैन एनी वन ऑफ यू लाइक आप अपने आंसर चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं. एक आंसर आया है जिन्होंने रिंगर लैक्टेट सेलेक्ट किया, उनका आंसर है फॉर रिंगर लैक्टेट विल मैनेज योर बीपी एज वेल एज डिहाइड्रेशन. ओके, एंड एनीवन हु इज इन द फेवर ऑफ नॉर्मल सलाइन? नहीं, एनएस आ रहा है, एनएस आ रहा है, एनएस आ रहा लिखा है, वो आंसर नहीं. हाँ, लगता है नॉर्मल सलाइन वाले खुद खामोश हैं. हाँ, so let's discuss the answer. Yes, normal saline. But you should know the rationale of the using normal saline or the preference of the normal saline over ringer lactate. What is the reason behind? So normal saline is the most commonly used fluid for resuscitation, followed by ringer lactate. अब ringer lactate के अंदर होता है lactate. It is a lactate base. It is a इसकी आइडियल सोल्यूशन है वॉल्यूम रिससिटेशन के लिए ये भी और नॉर्मल सलाइन भी. लेकिन कुछ सिचुएशंस में रिंगर लैक्टेट यूज करना पेशेंट्स के लिए हार्मफुल भी हो सकता है. लैक्टेट स्पेशली ये लिवर में जब जाएगा तो मेटाबोलाइज होगा बाइकार्बोनेट. ठीक है, बाइकार्बोनेट में जब ये होगा तो फिर जो है ना ऑलरेडी पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में है. तो हमें तो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को वर्सन कर सकता है. Then ringer lactate also has 4 milliequivalent of potassium, but its use in hyperkalemia is not shown to be aggravating. 0.4 milliequivalent per liter is not a high quantity. तो ये bit ये है ringer lactate को लेके कि it will cause hyperkalemia. No, it will not cause hyperkalemia. because इसके अंदर जो है अगर 1 लीटर आपने यूज किया जब 4 milliequivalent गए हैं तो वो कोई hyperkalemia नहीं करेगी. Usually 1 milliequivalent राइस ऑफ पोटेशियम के लिए 100 मिलीक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम चाहिए होता है. यानी 3.3 से 4.3 करने के लिए आपको एटलीस्ट 100 मिलीक्विवेलेंट ऑफ KCl रिक्वायर्ड होता है. Then normal saline has acidic properties due to chloride ion and is associated with hyperchloremic metabolic acidosis. तो ये कुछ pros and cons है दोनों टाइप ऑफ सोल्यूशन के लिए. In this situation, when patient is in metabolic alkalosis, so normal saline is the right fluid. क्योंकि यूजुअली ऐसे पेशेंट में क्लोराइड डिप्लीटिंग मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है तो ये क्लोराइड भी देगा, क्लोराइड रिच सोल्यूशन है. और तो ये जो है ना इट इज द आइडियल सोल्यूशन फॉर एनी पेशेंट हु इज कमिंग विद वॉमिटिंग एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. अगर यही पेशेंट डायरियल लॉसेस के साथ आता तो हमारे पास रिंगर लैक्टेट फर्स्ट चॉइस ऑफ सोल्यूशन होती है, क्योंकि डायरिया के साथ अमूमन पोटेशियम भी कम होता है और उसमें जो है आपके जो है ना प्योर बाइकार्बोनेट लॉस की वजह से जो है ना काफी यूजुअली नॉन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है.
talking about ringer lactate, हमने NS के बारे में पढ़ा. We're now going to talk about ringer lactate. So RL जिसे कहते हैं या lactated ringer कहते हैं, whatever you want it to be. RL is appreciated for its aggressive volume resuscitation role and it is used in those conditions जैसे कि डॉक्टर जवेरिया ने अभी बताया. ऐसी conditions जहाँ पे आपको एक तो ये कि वॉल्यूम रिससिटेट करना और साथ ही साथ आपको उसके मेटाबॉलिक एसिडोसिस को भी कवर करना हो. ऐसी कंडीशंस में आपके पास बर्न, सेप्सिस, अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और एसिडोसिस, फॉर एग्जांपल डायबिटिक कीटोएसिडोसिस आर वर्दी एग्जांपल्स. इसके अलावा 2022 में होने वाली एक स्टडी में ये भी शो किया गया है कि देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन हाइपरक्लोरीमिया व्हेन यू यूज रिंगर लैक्टेट एज कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल सलाइन इन अ सिंगल सेंटर रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट. तो किया क्या था, हमने एक सिंगल सेंटर स्टडी की जिसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पेशेंट की रेट्रोस्पेक्टिव व्यू में चेक किया गया फिजिशियन डिस्क्रिप्शन से कि जिन पेशेंट्स को रिंगर लैक्टेट लगा फॉर फ्लूइड रिससिटेशन वर्सेस जिनको नॉर्मल सलाइन लगा, उसमें रिंगर लैक्टेट लगने वालों को हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो इंसिडेंस थी वो स्टैटिस्टिकली रिड्यूस्ड एज कंपेयर्ड टू नॉर्मल सलाइन बिकॉज एज we have discussed normal saline contains about 154 milliequivalents per liter of chloride. तो फर्दर आगे चलते हैं. फर्दर उसके साथ क्या हुआ, इनिशियल फ्लूइड रिससिटेशन और मेडिकल थेरेपी के बाद लेवल ए begins to feel much better. He started on 0.9% normal saline 100 ml per hour as per your recommendation. The pain has decreased to 4 visual assessment score. 7 से 4 पे इसका पेन भी रिड्यूस हो गया thanks to tramadol. His BP has also raised from 97 to 110 systolic and he is still feeling a bit nauseous although there are no vomiting reported. Now new ABG show a good reduction of alkalosis going back towards the normal values of pH to 7.46. अभी भी slightly alkalotic है but much better than before. PaCO2 जो है वो नॉर्मल अपने उस पे 36 पे आ चुका है. बाइकार्बोनेट भी 35 37 से वापस 27 पे है. This means the patient has vitally improved overall. His lab values right now are 131, potassium is of 3, chloride is 98, bicarb is 28. The random blood glucose levels are 250, blood urea nitrogen is 104, serum osmolality is 312 and creatinine is 1.4. तो यहाँ पे पेशेंट को स्टेबल करने के बाद उन्होंने जीएस टीम को दिखाया, इन जनरल सर्जरी की जो टीम थी उससे उसका रिव्यू लिया एंड दे प्लान फॉर अ सीटी. एट दिस पॉइंट आर एनी इंटरवेंशन नीडेड? अगर कोई इंटरवेंशन नीडेड है तो वो क्या है? प्लीज अपना आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए. अगर नहीं कोई नीडेड तो भी बताइए, अगर कोई नीडेड है तो भी बताइए. अगर कोई अनम्यूट होके आंसर देना चाह रहे तो दे आर ऑल्सो वेलकम. यहाँ से इसको कंटिन्यू कर लेते हैं आगे. So you can see that the patient is having hypokalemia. 3 का उसका पोटेशियम है और क्लोराइड भी इसका कम है और 250 का इसका मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी हाई है, क्रेट भी हाई है, हाइपर ऑस्मोलर स्टेट में जा रहा है पेशेंट. 12 का उसका ऑस्मोलरिटी है. बट you cannot give any potassium at this point because these lab values were taken before your intervention. So they are the lab interventions. These are showing you the standard या आपको क्या कहना चाहिए सिचुएशन ऑफ द पेशेंट बिफोर यू इंटरव्यू, राइट. तो इस पॉइंट पे आपने जो है इसकी लैब वैल्यू से कंफ्यूज नहीं होना. तो CT and then further workup reveals that there is a gallbladder mass जिसे हम GBM कहते हैं, GB mass कहते हैं. The GS team provisionally plans for a lap chole which is laparoscopic cholecystectomy or removal of your gallbladder through laparoscopic hole. ये surgery है. He is admitted for the surgery in the surgical ward from the ER 8 hours after he was brought to the hospital. His labs are now repeated post intervention and are followed as sodium 137, potassium increased from 3 to 3.5, chloride from 93 to 107. Bicarb has also reduced to normal. RBG, BUN और serum osmolality, creatinine ये सारी चीजें ऑटोमेटिक नॉर्मल हो गई because the patient was dehydrated. देखिए जब पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है तो उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ी हुई होगी, जैसे आपको मिली. ठीक है, फिर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की वजह से देयर इज इंट्रासेलुलर ऑफ पोटेशियम शिफ्ट, तो वो आपको पोटेशियम भी थोड़ा सा लो नॉर्मल साइड पे मिल रहा था, 3 मिल रहा था. जब आपने पेशेंट को सिर्फ हाइड्रेट करना शुरू किया
तो उसकी ना सिर्फ ऑस्मोलैरिटी बेहतर होगी, पोटेशियम में खुद ही बेहतर हो गया, क्रिएटिनिन भी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गया। Now the team wants your opinion on starting maintenance fluid till surgery. The patient has been admitted by a general surgery team for lab chole and he is on list for surgery, and till surgery they want your opinion कि किस maintenance fluid पे patient को रखा जाए. And your response is keep him on existing 0.9% NS at 150 ml per hour. Give RL bolus of 1 liter and then continue at 50 ml per hour. Start D5W or consider D5NS, or start oral water intake as patient is vitally stable. The poll is now on your screen. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, इस पे अपना अपना रिस्पॉन्ड करें, इट्स ओपन फॉर यू, और फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। में ज़्यादातर लोग ने बोला है कि ओरल वाटर इनटेक जो है पेशेंट का वाइटली स्टेबल करेगा, और कुछ लोग कह रहे हैं गिव RL बोलसेस ऑफ 1 लीटर एंड कंटिन्यू एट 50 ml per hour. कुछ लोग कह रहे हैं कीप हिम ऑन एक्जिस्टिंग 0.9% नॉर्मल साइन एट 150 ml per hour और कंसीडर D5NS. मैडम साहब, तो बोलस तो इस वगैरह वाइटली स्टेबलाइज हो चुका है पेशेंट, तो यूजुअली बोलस की ऐसे पेशेंट में जरूरत होती नहीं है, ठीक है। पेशेंट यूजुअली सर्जरी से पहले जो है NPO होते हैं, नील पर ओरल होते हैं, तो ओरली फ्लूइड अलाउ करना जो है ना उनको, ऑल्दो पेशेंट अभी स्टेबलाइज हो गया है लेकिन उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं हुई है, एंड ही अगर उसका ओरल इनटेक स्टार्ट करी थी में स्टार्ट अगेन हैविंग हॉट वॉमिटिंग, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम तो अभी वही है। तो यूजुअली पेशेंट अभी जो है ना वाइटली स्टेबल जरूर, लेकिन NPO है तो उसका जो है ना ओरल वाटर इनटेक आप स्टार्ट नहीं कर सकते। नाउ द एग्जिस्टिंग नॉर्मल सलाइन 150 ml पे रखें, या डेक्सट्रोज वाटर प्लेन स्टार्ट कर दें, या डेक्सट्रोज वाटर हाफ स्ट्रेंथ हाफ डेक्सट्रोज सलाइन जो है वो हम स्टार्ट कर दें। ये जो है हमारे पास ऑप्शंस है। द करेक्ट आंसर इज consider dextrose saline. Why dextrose saline? One, कि dextrose is a source for the calorie requirement. Like dextrose आप जब देंगे, जब patient already NPO है, तो it usually gives 170 kilocalories per liter energy to the body. अगर dextrose और 50 ग्राम dextrose per liter of fluid इसको patient को दिया जाएगा तो, और दूसरा आपको अभी भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पूरी तरह रिवर्स नहीं हुआ, तो आपको कुछ ना कुछ क्लोराइड बेस्ड फ्लूइड इसको देना है। तो डेक्सट्रोज सलाइन इज द आइडियल मेंटेनेंस फ्लूइड इन दिस केस। शायद आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? Yes, I want to give the reference of this study that was done in 2020. It showed that D5W as a drug diluent did not cause any statistically significant hyperglycemic effect versus normal saline in critical care patients. But what it did is that it saved the patient from hyperchloremic acidosis. कहने का मकसद ये है कि अक्सर हमारे पास D5 इस्तेमाल ना करने की एक वजह दी जाती है, वो ये दी जाती है कि D5 करने से पेशेंट को हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटिक है। बट इसके अंदर जो ग्लूकोज का कंटेंट है दैट इज वे लेस देन द एक्चुअल कंटेंट दैट में कॉज हाइपरग्लाइसीमिया इन सच पेशेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप D15 लगा रहे हैं, D25 लगा रहे हैं, D50 लगा रहे हैं, that would obviously cause hyperglycemia which could worsen your patient's condition, but D5W has minimal amount of dextrose per liter of the fluid. So in this study that was done in 2020, they showed that D5W जब हम even drug diluent की फॉर्म में भी उसको पेशेंट को दे रहे थे, तो they did not cause any hyperglycemic effect.
हाँ, एक इसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो आता है वो ये आता है कि परसिस्टेंट सोडियम क्लोराइड जो उसको अगर आईवीएफ से भी मिल रहा हो, फिर ड्रग भी उसी में डाइल्यूट होगी जा रही हो, उससे हाइपरक्लोरीमिया जो है और एसिडोसिस की कंडीशन जो है वो सेव होता है। इंडीड हमारे पास होता भी है, हमारे नेफ्रो की डॉक्टर जवेरिया जो है, ये हम जब राउंड पे जाते हैं तो अक्सर पेशेंट जो हाइपरक्लोरीमिया में जा रहे होते हैं उसको हम D5 से या नेफ्सलाइन से जरूर स्विच करवाते हैं। Yes, iatrogenic hyperchloremia is one of the commonest complication in hospitalized patients. तो जैसे कि उन्होंने कहा कि ना D5W is not associated with hyperglycemia. Yes, in majority of patient it is not, but in certain patient it may cause hyperglycemia. तो आपको शुगर्स पर नजर रखते हुए हमेशा इनको हाइड्रेट करना होगा। तो गुड मेंटेनेंस फ्लूइड इज D5N और D5 हाफ स्ट्रेंथ डेक्स्ट्रोसलाइन। और इसमें आप मेंटेनेंस में जो है हमारे पास एक और जो पॉइंट है कि ऐसे तमाम पेशेंट तो आप जो है ना थोड़ा सा KCl भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर वो ओरली बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। और दोज हु आर टेकिंग ओरली तो उनमें शायद फिर भी इतनी जरूरत ना हो, लेकिन अगर किसी को मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी दी जा रही है और वो ओरली एंटीओ है, ओरली अलाउड नहीं है लेने के लिए कुछ भी, तो उसके में जो है ना अगर आप मेंटेनेंस इन 1 लीटर ऑफ फ्लूइड ऐड कर देंगे तो वो उनकी डेली पोटेशियम रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर देंगे। Alternatively, normal saline, finger lactate plus KCl may also be used in individualized to patient condition. Not in this particular case. जब भी कोई IV फ्लूइड की चॉइस होगी वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगी, पेशेंट को किस चीज की जरूरत है। जो इतने सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट फ्लूइड है, डेक्सट्रोज वाटर कहाँ इंडिकेटेड है, रिंगर लैक्टेट कहाँ इंडिकेटेड है, नॉर्मल सलाइन या हाफ स्ट्रेंथ सलाइन कहाँ इंडिकेटेड है, हमें हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना होता है जब भी हम कोई IV फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट करते हैं। These are the references that we use. अच्छा, इसके अंदर एक अगर आपकी मिसकंसेप्शन हो रही है तो मैं आपको दूर कर देता हूँ कि इस पेशेंट में हमने D5NS को ही क्यों चुना, हमने रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन को क्यों नहीं चुना। तो उसकी वजह जो थी वो उसके आंसर्स में मौजूद उसकी डोजेस का था। नॉर्मल सलाइन को हम 150 ml per hour पे नहीं यूज चलाएंगे बिकॉज द पेशेंट इज वाइटली स्टेबल, देयर इज नो नीड फॉर एग्रेसिव resuscitation of fluid. So high doses are not recommended. Therefore ये वाला ऑप्शन हमने इसलिए यूज नहीं किया था। जबकि अगर हम रिंगर की बात करें तो रिंगर में वो पोलर देने को बोल रहा था करेक्ट आंसर, बट according to institution and according to the patient criteria you can also keep such patients on ringer lactate and sodium chloride as Dr. Javeria told. So these were the references that we used for today's presentation. I hope आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। कोई query हो कुछ हो तो you can always ask us. So this was all. अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दें, we'll refer to that, नहीं तो फिर हम इसको खत्म करें। And in the end, clinical pharmacist के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि IV फ्लूइड थेरेपी जब भी आप किसी पेशेंट को किसी फिजिशियन के साथ देख रहे हो तो the vital information you need is what is the cause of volume depletion, why उसका वॉल्यूम करंट वॉल्यूम स्टेटस क्या है, जब आया था तो एट द प्रेजेंटेशन क्या था, उसमें अब जो इंटरवल चेंज क्या हुआ है, और दूसरा उसकी जो है लैब, उसकी IV फ्लूइड थेरेपी स्टार्ट होने के बाद उसकी लैब में कोई ऐसे चेंज है, फॉर एग्जांपल iatrogenic हाइपरक्लोरीमिया डेवलप हो रहा है या उसको हाइपोकैलेमिया डेवलप हो रहा है तो उसमें पोटेशियम ऐड करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट, और ये जो है ना पेशेंट में वेरी करती रहती है। आपने जो सुबह की इन्फॉर्मेशन हो जरूरी नहीं कि वो उसके मुकाबले में पेशेंट की कंडीशन चेंज हो गई उसकी फिजिशियन के ऑर्डर बदले। और पेशेंट केयर इज ऑलवेज needs an integrated approach. Clinical pharmacy play an important role in the stewardship of IV fluid and drug dosing and drug interaction. तो आप लोगों का इनपुट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर जवेरिया। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हमारे मैनेजर सर आरिफ हमारे साथ हैं, अगर सर कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। सर आरिफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो है ना डॉक्टर जवेरिया का और साद का बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि दोनों ने अपना टाइम निकाल के और बहुत अच्छा और बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन लिया इसमें से, क्योंकि अटेंडी भी माशाल्लाह अच्छे थे और जो इतने जिन्होंने ज्वाइन किया, जिन्होंने
सुना, उनका भी बहुत शुक्रिया और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, अगर नहीं है तो फिर हम लोग सेशन एंड कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए 2 पार्ट सीरीज है, नेक्स्ट मंथ इसका सेकंड पार्ट। अच्छा, ये सीरीज तो कंटिन्यू रहेगी इंशाल्लाह। फार्मेसी और मल्टीपल मेडिकल टीम के साथ हम लोग ये सेशन करते रहेंगे। नेफ्रोलॉजी का इस सेशन का एक और पार्ट होगा आने वाले दिनों में, तो आपको बता दिया जाएगा। होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर द कोलैबोरेटिव अप्रोच। Thank you, Dr. Saad and Dr. Javeria, for the session. It was very informative for all. Thanks to all for joining us. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.